Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying your classes, online classes. As you all are familiar that we discussed the poem that was explained by Alexander Pope, an essay on man. So we gone through the poem, we discussed its explanation. The one thing that is quite essential and important regarding this poem, that is question answers. And I thought that these question answers must need to be clarified, okay, because this is one of the major area of this poem that you all need to understand. What are the questions that you will be asked, or you need to understand? Let me share with you some of the questions that are related with its explanation. Question number one, that is related with its poem, that ignorance of future is a blessing according to Alexander Pope. Do you agree or disagree? Now this question, as I have understood, as I have gone through the explanation, and as I have gone through the stuff and material related with this poem, I thought that yes, this is really important to share with my students, as they may explain it in more better way, and they can comprehend the message and the theme of the poem. So I repeat the question again. Ignorance of future is a blessing according to Alexander Pope. Do you agree? Now इस क्वेश्चन को अगर हम समझें, ओके, लेट मी टेल यू इन उर्दू कि इस सवाल के पूछने का मकसद क्या है कि we all creatures created by Allah Almighty are not familiar to future events. मुस्तकबिल के इवेंट्स में यानी हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. So to ignore the future events is a kind of blessing by Allah Almighty. क्या ये खुदा तबारक तआला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है? Let's find out the answer. Now, according to Pope, Alexander Pope, what he has given, what he has defined, and how he has addressed that question, Pope says that God has not revealed to his creatures to the events of the future. According to Alexander Pope, उसका मानना यही है, उसका कहना यही है कि खुदा तबारक तआला ने यानी क्रिएटर ने अपनी मखलूक को जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं वो बताए नहीं हैं, वो उन पे जाहिर नहीं किए हैं. ओके, सो मोर ओवर ही हैज़ ग्रांटेड द इटर्नल होप एज अ ग्रेट ब्लेसिंग. और इंसान की जो होप है, ओके, जो इटर्नल होप है यानी अब्दियत वाली हमारी जो होप है, वो भी एक हमारे लिए नेमत है. सो it is hope for the future happiness and prosperity that motivates a person to keep struggling and striving. यही एक उम्मीद है, एक होप है, जिसकी बिना पे इंसान in his life स्ट्रगल भी करता रहता है और स्ट्राइविंग फॉर बेटर यानी कोशिश करता रहता है कि बेहतर से बेहतर की वो कोशिश में लगा रहता है. ओके, सो वेदर now, similarly, ignorance of future events, whether happy or unhappy. Now, try to understand. Let me do a favor to my student who is with me right now. You all would be glad to know that how poet has explained these or addressed these answers. Similarly, ignorance of future events, यानी जो हमारे फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनकी इग्नोरेंस, ओके, उनकी इग्नोरेंस बाय ऑल इट्स क्रिएचर्स, वेदर हैप्पी और अनहैप्पी. नाउ वी आर फेमिलियर, ये भी हमें पता है कि भाई फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स हम कहते हैं वाक़यात को, ओके, हैपनिंग्स को, वेदर वो आपके खुशी के हों चाहे दुख के हों, ओके, चाहे उनसे आपको यानी फ़ायदा पहुँचे या कोई नुकसान पहुँचे. So, whether happy or unhappy keeps human mind at peace and free from tension and anxiety. How? What is the philosophy behind this answer? फ्यूचर के जो आने वाले लम्हात हैं हमारे लिए, जो इवेंट्स हैं, चाहे वो खुशगवार हों चाहे
यानी गम के हों, दुख के हों, तकलीफ के हों, these all future events keeps man away from these tensions and anxiety. As I told you in previous lectures कि if you have idea, अगर आपको कुछ पता हो जाए कि भाई in coming future you are going to be hurt, आपको नुकसान पहुंचने वाला है, okay, you are going to lose someone or lose something related with you, कि आपके पास कोई चीज है, कीमती चीज है, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, आपको पता हो कि इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू लूज हिम और एनी ऑब्जेक्ट, आपको पता चल जाए कि यानी मुझसे वो चीज खो जाएगी, ओके, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, आपको क्या महसूस होगा? ऑफ कोर्स यू विल बी इन टेंशन एंड डिप्रेशन, ओके, इन एंजाइटी, आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन दैट अल्लाह अलमाइटी हैज kept his all events, future events in secrecy from man, even from all creatures, from other creatures as well. इसीलिए यानी इस बात को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ओके, ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है, दैट ही हैज केप्ट ऑल हिज फ्यूचर इवेंट्स रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग्स आर अदर क्रिएचर्स इन सीक्रेसी, मिस्टीरियस रखे हैं, वो राज में रखे हैं. सो नाउ द सेकंड आइडिया दैट इज कनेक्टेड विद दिस वन कि इफ गॉड डिस्क्लोज्ड टू ह्यूमन बीइंग्स द टाइम टू कम, अगर खुदा तबारक व तआला आने वाले जो लम्हात हैं, जो आने वाले फ्यूचर के इवेंट्स हैं, इंसानों पे जाहिर कर दे, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा फिर? If God disclosed to human beings the time to come, their life would turn into an unending torture and tension. कि इंसान पे जो तकलीफें, हालांकि अब मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ओके, nobody has any idea, nobody has any idea कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उससे आने वाले अगले दिन को क्या होने वाला है. We all are not familiar, and this is why we all are living our happy life. ओके, 24/7 हम इसी यानी जो है वो मगन में रहते हैं कि हमें कुछ यानी पता नहीं है. अगर पता चल जाए, अगर पता हो इंसान को, ओके, तो जाहिर सी बात है हाउ लाइफ वर्क्स, लाइफ कैसे गुजरेगी, जो लाइफ का साइकिल है वो कैसे गुजरेगा. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ब्लेसिंग बाय अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह अलमाइटी का एक राज है, एक नेमत है जो उसने इंसान पे ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की हैं, उसको नहीं बताया. ओके, नाउ इफ गॉड डिस्क्लोज्ड टू ह्यूमन बीइंग्स द टाइम टू कम, देयर लाइफ वुड टर्न इनटू एन अनएंडिंग टॉर्चर एंड टेंशन. और जाहिर सी बात है इस टेंशन से बचने के लिए, अनएंडिंग टॉर्चर से, तशद्दुद से बचने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इन सारी चीजों को राज में रखा है. ओके, आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग द आइडिया. So, therefore, according to poet, therefore he concealed from all of their future and fate so that they should go on leading their lives peacefully and hopefully. और यही एक वजह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी जो है, क्योंकि उसे पता नहीं है, अल्लाह तबारक तआला ने वो सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं, राज में रखी हैं, और इसी एक उम्मीद पे इंसान अपनी ज़िंदगी पीसफुली भी गुजारता है, साथ ही साथ होपफुली भी गुजारता है, यानी अच्छी अच्छी होप्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है. नाउ एज आई हैव होप्स दैट tomorrow would be better day for me, although I don't have any idea that whether it is going to be good day or bad day for me. Okay, suppose if you have any idea, या अगर आपके पास if you have arranged any kind of event, okay, किसी की शादी होती है परसों, किसी का कोई इवेंट होता है, या किसी को यानी दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, या किसी को सफ़र पे जाना होता है, या आपने यानी तरह तरह के इंसान प्लानिंग्स करके रखता है. ओके, किसी ने खूब कहा है कि खबर एक लम्हे की नहीं और प्लानिंग हम यानी सालों की रखते हैं. अंडरस्टैंड, दिस इज द फिलॉसफी, सिंपल फिलॉसफी ऑफ दिस पोएम. इसी बुनियाद पे हम इंसान जो है वो तवक्कुआत रखते हैं, उम्मीदें वापसा रखते हैं कि यस कल हम फलां जगह को जाएंगे, ओके, या परसों जो है वो हम इस गैदरिंग को जो है वो अरेंज कर लेंगे. although we are not familiar that whether we will be alive on that day or dead, but still we have hopes. Okay,
still we have good hopes, not only hopes but good hopes. तो इसी फिलॉसफी पे शायर ने भी कहा है कि इट इज अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन बींग्स. ओके, सो मूविंग फर्दर टू सेकंड क्वेश्चन. I hope that this is quite clear. Okay, what is second question? Second question is that why is the lamb pleased to the last? As poet has given the example of lamb. Okay, lamb की छोटी सी मिसाल दी है शायर ने, तो उसके लिए शायर कहता है कि आखिर तक यानी टिल हिज स्लॉटर, उसके ज़बा होने तक, उसके कुर्बान होने तक या उसकी डेथ तक वो खुश क्यों रहती है. ओके, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है. अंडरस्टैंड, शी इज नॉट फेमिलियर ऑफ हिज फेट. उसकी यानी तकदीर का उसे पता नहीं है. दैट्स व्हाई वो हैप्पी होती है, ग्लेड रहती है. द लैम्ब इज प्लीज्ड टू द लास्ट because it does not know that it is going to be slaughtered by its master very soon. वो इसी बुनियाद पे खुश रहती है क्योंकि उसे इल्म नहीं है. Okay, as we have discussed, as we have read in our poem, कि जो चीज़ फरिश्तों को पता है वो इंसानों को पता नहीं. जो चीज़ इंसानों को पता है वो जानवरों से पोशीदा है, यानी उनको पता नहीं है. दिस इज़ वाई वो जो यानी बकरी की मिसाल ले लें या किसी जानवर की मिसाल ले लें, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लैम्ब का ही मिसाल ले लें. यानी ये सिर्फ हमें समझाने की यानी जो है वो मिसाल दी गई है, समझाने के लिए. इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड द आइडिया और इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड द फिलॉसफी ऑफ दिस पोएम. कि जनाब देखें, एक छोटा सा भेड़ का बच्चा है जिसको पता ही नहीं कि वो थोड़ी देर में अपने मालिक के हाथों ज़बा होने वाला है. वो आखिर तक खुश रहता है, उसके हाथों को चूमता रहता है, उसके हाथों से घास खाता रहता है, अच्छा यानी खाना खाता रहता है, फूड खाता रहता है. सो दिस इज द लैम्ब इज प्लीज्ड टू द लास्ट बिकॉज इट डज नॉट नो दैट इट इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड बाय इट्स मास्टर वेरी सून. इन फैक्ट इट इज सो इनोसेंट दैट इट लिक्स द हैंड ऑफ इट्स मास्टर. ये बहुत मासूमाना बात है, बहुत मासूमाना बात है. जो जिस बंदे से वो ज़बह होने जाएगा या होने वाला है उसी के हाथों को चूमता रहता है. ये इससे बड़ी मासूमियत की बात क्या हो सकती है. ओके, ऑफ कोर्स इट इज सच अ इनोसेंट थिंग दैट शी इज नॉट अवेयर दैट शी इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड वेरी सून एंड शी लिक्स द हैंड दैट विल रेज टू स्लॉटर. ओके, यानी उसी के हाथों से खाना या उसी के हाथों से जो है वो कुछ और चीज़ खाना, ये बहुत बड़ी मासूमियत की बात है. ओके, hand of its master in which he is holding a knife to slaughter it. Now, an animal don't have any idea कि उसके हाथ में छुरी भी होती है. ओके, आप देखें कुर्बानी के टाइम पे, ओके, कुर्बानी के टाइम पे आपने देखा होगा, as we are Muslims and we have just celebrated our ईद उल अज़हा. तो उस पर आपने देखा होगा कि जानवरों को या जानदारों को, हालांकि उनको पता नहीं है कि थोड़ी देर में वो जो है वो यानी अल्लाह की राह में कुर्बान होने जाएंगे या हो रहे होंगे, बट दे रिमेन हैप्पी टिल देयर लास्ट ब्रीथ. आखिरी सांसों तक वो खुश रहते हैं. ओके, ड्यू टू एन अनअवेयरनेस ऑफ द फ्यूचर के बारे में पता ना होना या इसकी वजह से, क्योंकि हमें इवन जानवरों को कोई इल्म नहीं होता, it remains satisfied and pleased to the last breath of its life and eats good food. लैम्ब का यही एक यानी जो फिलॉसफी है, सिंपल सा आइडिया है कि वो खुश इसीलिए रहती है क्योंकि उससे कुछ इल्म नहीं है. ओके, कोई इल्म नहीं है कि मुस्तकबिल में या थोड़ी देर के बाद उसके साथ क्या होने वाला है. The third question, that is again important one. Okay, there are only total 5 number of questions that needs to be clarified. Okay, that needs to be explained. That's why I thought to bring it for you guys. Now the third question, what does the poet mean when he says who sees with equal eye as God of all? इस लाइन की क्या माने हैं, क्या मुराद है इस लाइन से जब शायर कहता है कि what who sees with equal eye as God of all. Now
For you guys, it is simply a poetic line, but this poetic line contains a huge meaning. Okay, बहुत सी जबरदस्त किस्म की यानी माने इसमें समाई हुई है, एक आइडिया समाया हुआ है. Okay, so the poet actually means that in the eyes of God every creature is equal. Of course, इसमें कोई शक है? I don't think so. सबकी सब मखलूक अल्लाह तबारक तआला की नजरों में बराबर है. Okay, so the poet actually means that in the eyes of God every creature is equal and his laws are equally binding for all creatures. और उसके जो कानून हैं वो भी सारी मखलूक के लिए एक जैसे हैं. Okay, and this is why poet has given the example of sparrow as well as hero. चाहे हीरो मरे चाहे एक चिड़िया मरे, दोनों के लिए कानून एक ही है. जानवर भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं. ओके, नेचर के लॉज सबके लिए बराबर होते हैं. सो अ वेरी पॉपुलर पर्सन हैज टू डाई, नो मैटर हाउ मच पॉपुलर यू आर, हाउ मच फेमस यू आर. कितने बड़े, यानी दिस इज something that is quite easy to understand, and I think if I start telling and if I start defining this idea to students of 6th or 8th class, they would understand easily. How? कैसे? क्योंकि ये एक ऐसी सिंपल सी बात है कि जनाब चाहे कोई मशहूर बंदा उठवा लें पूरी दुनिया से, ओ भाई जब हमारे आका जो इस पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए, पैगंबर बन के आए, उनको भी यानी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा. तो हम इंसान क्या चीज़ हैं, हम यानी आम इंसान की क्या मजाल है. ओके, बहुत सारे लीडर्स थे. कपल ऑफ ईयर्स बैक वी हैड बेनज़ीर भुट्टो. कुछ साल पहले हमारे साथ यानी जो है वो ईदी भी थे, बेनज़ीर भी थी मोहतरमा. बहुत बहुत बड़े नाम थे. उन सबको जाना है, हमें भी एक दिन जाना होगा. दिस इज हाउ poet has said that the law of nature is equal for all creatures. सब मखलूक के लिए ये कानून कुदरत का एक जैसा है, सब पे लागू होगा. ओके, we have to follow these laws of nature and we all are bound to follow. So this is what his laws are equally binding for all creatures. A very popular person has to die, and similarly a sparrow has also to face its death. एक चिड़िया को भी अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा. Which shows that, अब ये बात क्या जाहिर करती है कि एक मशहूर बंदा भी मरे, एक हीरो भी मरे, एक चिड़िया भी मरे, एक जानवर भी मरे, एक जानदार भी मरे, तो इससे हमें पता क्या चलता है? It shows or that shows that God's laws are unchangeable, कि खुदा के कानून यानी तब्दील नहीं होने वाले, अनचेंजेबल है, कांस्टेंट है. ओके, एंड ऑल हिज क्रिएचर्स आर बाउंड टू फॉलो देम. सब की सब मखलूक को जो है वो फॉलो करना है. ओके, मूविंग फर्दर टू 4th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज wet the great teacher death and God adore. अब इससे उसकी क्या माने है, क्या मुराद है? What he simply wants to say, okay, what he wants to convey by using this line. इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए शायर का मकसद क्या है, बताना क्या चाह रहा है वो? We need to understand, we need to define this idea. Okay, so the poet means that if a person aims to rise and get a high rank in society, अगर इंसान चाहता है कि वो उभरे, तरक्की करे. राइज का मकसद यहाँ पे यानी उभरना क्या है? तरक्की करने की यानी मिसाल है. ओके, the poet means that if a person aims to rise and get a high rank in a society, अगर वो चाहता है कि मुआशरे में तरक्की पाए, तरक्की की मंजिलों को छुए, ओके, कामयाबी की राहों को छुए, तो फिर he should not forget his death. उसे अपनी मौत को भूलना नहीं चाहिए. ओके, remembrance of death always keeps him humble and the fear of death makes him
टर्न टू गॉड। मौत का जो यानी मौत की जो यादगिरी है, वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यानी मौत को याद करना चाहिए। इससे क्या होगा, खौफ खुदा भी बना रहेगा और हमें अपनी असल जो हैसियत है वो भी मालूम पड़ेगी। अदरवाइज आई हैव सीन मैनी पीपल, आपने भी देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, ओके, बहुत सारी यानी तारीख के पन्नों को आप उठा के देखें कि वहाँ से भी हमें पता चलता है कि जिसने इस हकीकत को ठुकराया या इस हकीकत को मानने से इनकार किया, दे फेल्ड, ओके, वो तबाह और बर्बाद हो गए। बहुत बहुत यानी बड़े बड़े नाम हैं, बहुत यानी ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात, किस्से, कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी। फ़िरौन है, नमरूद है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात हैं। इनको यानी अगर हम देखें तो इट कीप्स अस और इट रिमाइंड्स अस दैट यस वी नीड टू रिमेंबर डेथ। हमें मौत को याद करना चाहिए। ओके, सो देन टर्न टू गॉड। अच्छा, ये बात भी हमें पता चलेगी कि इस यानी मौत को याद करने के यानी साथ साथ हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि हमें खुदा की जानिब वापस जाना है। ओके, देन द लास्ट idea of this question, in this way he loves him from the bottom of his heart. ओके, उसका यानी जो है वो खुदा तबारक तआला से प्यार भी बढ़ता है। The last question, that is the fifth question related with this poem. What does the poet mean when he says the soul uneasy and confined from home? इस लाइन से क्या मुराद है शायर की? ओके, देखें how Alexander Pope has used these ideas in his poem, कि किस तरह से इन आइडियाज़ को जो है वो सिंगल लाइन्स में, and this is why I told you in previous lecture that there is no single central idea of this poem. Every line has its own central idea and theme. Now you can observe, you can analyze from these question answers जो हमने 4 questions डिस्कस किए हैं, यहाँ से आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगा लें कि how different ideas are being used there. Okay, how important this poem is, and the way poet has explained, the way poet has used his writings is outstanding. Okay, the last question कि the soul uneasy and confined from home की क्या माने है, इस आइडिया से हमें क्या पता चलता है? It means the poet wants to say that the soul comes from the heaven. आपको भी पता होगा कि जो इंसान की रूह है उसका असल घर इंसान की बॉडी नहीं है। ओके, दिस इज सिंपल आइडिया। ये उसकी यानी उसका कहने का मकसद है कि जनाब जो रूह है वो कहीं और से आई है, कहीं और से ताल्लुक़ रखती है, आसमान से आई है, हेवन से आई है। द पोएट मीन्स दैट द सोल कम्स फ्रॉम द हेवन एंड इट इज कन्फाइंड इन द प्रिजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान का जिस्म उसके लिए एक कैद खाने की मानद है, एक कैद है रूह यानी रूह का। ओके, रूह जो है वो इंसान के बॉडी में, इंसान के जिस्म में आने के बाद यानी अपने आप को एक कैद में समझती है। ओके, दैट्स व्हाई द पोएट हैज सेड द सोल अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम। जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर से दूर हो तो आप अपने आप को कैद में समझते हैं। ओके, कुछ अरसे के लिए आप बाहर चले जाते हैं तो समटाइम्स यू फील अनईजी, समटाइम्स यू फील डिप्रेस्ड, समटाइम्स यू फील दैट यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस। आप उस जगह से ताल्लुक ही नहीं रखते एंड यू वांट टू गो बैक टू योर ओरिजिनल डेस्टिनेशन। ओके, एक्चुअल डेस्टिनेशन, आप अपनी असल यानी मंजिल पे जाना चाहते हैं जो आपका घर है। रूह का भी ऐसे ही मिसाल है। ओके, रूह की जो असल घर है वो इंसान का जिस्म नहीं है। The poet means that the soul comes from the heaven and it is confined in the prison of human body. It desires freedom to go back to its real home. उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी तवक्को होती है, उसकी विश होती है कि वो अपने असल मकाम पर पहुंचे। आज़ादी ढूंढती है, जगह ढूंढती है। ओके, so it finds its freedom
वो अपनी असल आज़ादी तब हासिल करती है जब इट फाइंड्स इट्स फ्रीडम आफ्टर डेथ, जब उस इंसान को मौत आ जाती है। ओके, क्योंकि मौत जिस्म को आती है, रूह को मौत नहीं आती। इट फाइंड्स इट्स फ्रीडम आफ्टर डेथ व्हेन इट रिलीजेस आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जब वो इंसानी जिस्म से अलहदा होती है, अलग होती है, तो उसे आज़ादी मिल जाती है। ओके, ह्यूमन बॉडी एंड फ्रीली गोज बैक टू इट्स रियल होम, और वो अपने असल घर में जा पहुंचती है, तभी उसको आज़ादी मिलती है, तभी उसको असल अपनी यानी जो है वो मकाम मिलता है। अंडरस्टैंड? until and unless it remains with human body or in human body, soul feels that I'm in custody, I'm in prison, I'm confined. ओके, रूह तब तक ये समझती है, जब तक वो अपने इंसान के जिस्म में होती है, तब तक वो अपने आप को कैद में समझती है। सो this was the last question that we have discussed, and I hope that after explaining in more detail, after telling you guys each and every point of the poem, I hope that these ideas are quite clear to you, and there is nothing remaining that needs to be clarified. Okay, if you guys have any question, or if you are not still not able to comprehend this poem, then your questions will be welcomed. I will welcome your questions. If you have any question, then you can send me your questions and comments even via chat box. So what I have thought that one by one we will be discussing these question answers of every poem. This was related with the fourth poem that we started a couple of days back. Still there are certain poems that we have done before, and we will try to explain all these questions and answers related with poems. So if we have time, I think 4 to 5 minutes are remaining, so let me share with you question answers of the previous poem that we discussed, that was Samson Agonist. Okay, if we have time, then we don't need to waste our time. The first question that is related with Samson Agonist poem, that is, who is the poet of the poem Samson Agonist? What do you know about him? It is simply asking the biography of the poet. Okay, as we all are familiar that John Milton wrote this poem. The poet of the poem Samson Agonist is John Milton. He was born in 1608 and was died in 1674. He was born in London, as I told you, the son of a well-to-do law scrivener. He studied for 7 years at Christ College. You can find its biography in your handbook as well. Okay, at the end जो है आखिर में आप पढ़ सकते हैं कि जितने भी पोएट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की पोएम्स हों जिन्होंने लिखी हैं, या इंटर के कोर्स की जो यानी पोएम्स हैं, उन सब पोएट्स की बायोग्राफीज आपके बुक में दी गई हैं. यू कैन read. He studied for 7 years at Christ College, Cambridge, where he gained a high reputation as a classical scholar. Milton's verse is in some respects outside the main tradition of English poetry. Number 2 question that is related with that poem. Give a brief introduction of the poem Samson Agonist. कि Samson Agonist poem का एक brief सा आप यानी introduction बता दें. The poem lines from Samson Agonist derived from John Milton's great poetic drama that describes the death of its hero Samson. Okay, जिसमें सैमसन की मौत का जिक्र किया गया है, सैमसन की बहादुरी का जिक्र किया गया है. He was a man of immense strength. We all have idea कि सैमसन जो है वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक था, but had been taken captive through the treachery of his wife, कि उसकी वाइफ की दगाबाजी के यानी ज़रिए दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया था. By the Palestinians, his enemies were Palestinians, the deadly enemy of his race, जो कि उसकी कौम के, उसकी नस्ल के, उसके कबीले के सख्त तरीन दुश्मन थे. So the passage in the poem describes Samson saved his people by using his strength, कि samson ने अपने लोगों को अपनी ताकत के ज़रिए बचाया, अपनी कुर्बानी दी जान की. Okay, under to kill the assembled Palestinian leaders, but in bringing down the roof of a great temple upon the heads of those assembled there,
and he sacrificed his own life at the same time. We all have idea कि सैमसन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के साथ साथ अपनी जान का नजराना भी दिया था उसने. So we are running short of time. I will share with you all, guys, if we will have classes, the remaining question answers of remaining poems. Till that, take a special care of yourself. Allah Hafiz.